Good morning. Now I'm starting a accounting convention. Accounting convention is a very important topic. There are four accounting conventions. First is convention of disclosure. It shows that all the material information should be disclosed. We all know that even you have to purchase and even you have to buy any kind of materialistic thing, it will be recorded in your account, and the information not only included in the final account but also clear in the balance sheet. Also it will be shown in the balance sheet, so that anybody should be able to make a free judgment. ओके, कि कोई भी पर्सन है वो फ्रीली जजमेंट लगा सके। भी हर एक इंफॉर्मेशन है जो फुली डिस्क्लोज डाली हुई है। इवन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, सो इस कॉन्सेप्ट, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो जो है उसको हर एक कॉन्सेप्ट का अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाएगी, वो डिस्क्लोजर होगी, हर एक आइटम की एक तरह की क्लैरिटी होगी। तो दैट मीन्स investor willing to invest in the business or industrial company. And second is convention of consistency. Consistency means, it means the same accounting principle should be used for the preparing the financial statement. Means principles of making the account is not changed, it will be same for the different periods, so that performance would be compared from the actual and standard. So we have to judge what we have to achieve, what we have to lose. Consistency means when you have to not pauses, when you have to taking not pauses in your business, in your company. Third is a convention of disclosure. Convention of disclosure, I'm sorry, it's not convention of disclosure. Firstly I have to, fourth, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिस्टिक। मैं ये वाला अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताती हूँ, इसमें कुछ और है। डिस्क्लोजर वी हैव टू डू, प्रिजर्वेशन होगा, मैं इसको आफ्टर दैट करवाती हूँ, पहले मैं इसको करवा दूँ। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी means it present and only record that significant and materialistic, that records just that item just record which are materialistic things. Non-materialistic are not affected the balance sheet, we all know that. So that means it convention of play safe, there is some risk and also convention of preservation. द कन्वेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि रिस्क को जब कोई भी ये कन्वेंशन कहता है कि जब हमने बिजनेस करना है तो उसमें हमने सेफली प्ले करना है। देयर आर सम रिस्क एंड अनसर्टेनली इन द बिजनेस, वी ऑल नो दैट। इंश्योर इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी गिवन प्रॉपर हमें कंसिडरेशन चाहिए। अगर लॉस है उसको हमने एज इट लॉस लेके चलना है, प्रॉफिट है हमने इग्नोर करना है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें लॉस हो गया तो हमारा वो प्रॉफिट उस लॉस को कवर कर सकता है। थैंक यू सो मच।